Outdoor for cinema. ठीक है? Third, outdoor or indoor, it may be sometimes. That is called PA. This is called public address. PA means public address systems. Fourth, poly sound designer. Fifth, indoor sing sound designer. Indoor sings. Location sync. What is indoor? It is very easy. स्टूडियो के अंदर में बैठो काम करो ठीक है what you are doing in the indoor sound there is two one for music for cinema for music we will require multiple rooms in a studio so if this is a room then this room can be termed as control room if it is a music studio and we should have 3 to 4 numbers of dubbing room with different character क्यों different character होना पड़ेगा because the musical item has got different tonal character what is this type of what are they like one instrument termed as wind character like basuri saxophone kalapasi etc this is called wind category wind मतलब हवा से बजाता है उसको another is called string category string जैसे गिटार हो गया मैंडोलिन वायलिन यहाँ पे string है this is string third is a ladder rhythm like your tabla dhulki these are all made with ladder it's called ladder instrument so all this type of instrument require different sizes of room and if possible different acoustic but acoustic nowadays it is in our place it is not possible to have different acoustic for different instruments but sizes should be different so now finish this thing body chota ho gaya suppose this is a control this is a studio क्या रहेगा इस पे CR कंट्रोल रूम ठीक है जैसे वो है कंट्रोल रूम में क्या रहेगा ऑल द इक्विपमेंट्स फिर D1 dubbing 1 dubbing 2 then one floor is required this is what the floor is for what for organizing group violins group tabla group dholak etc हम लोग क्या करता है एक तबला बजा देता है हो गया but in good recording you should have all this in group 4 numbers of tabla 4 pair of tabla 4 numbers of dholak they will play together so that is why one floor is required studio floor it should be big and dubbing one क्या रहेगा flute instrument जैसे बांसुरी कलापसी सैक्सोफोन एक रूम में घुसा दिया डबिंग टू क्या रहेगा स्ट्रिंग्स जैसे वायलिन मैंडोलिन एक रूम में घुसा दिया और D3 फॉर योर वॉइस आर्टिस्ट रहेगा ना वोकलिस्ट so this should be the category this should be the minimum requirement of your sound studio where
you can do music, where we can do any background music, track laying, matching, lip synchronization. Matching means lips का साथ matching करने का. This is the category of the music studio. But in case of re-recording, final mixing of sound with the visuals, ये सब हम लोग क्या कर रहा था? म्यूजिक में क्या होता है? The bass guitar is always fixed. The level of the bass guitar, the level of voice, in 90% it is fixed. Sometimes हम लोग अप डाउन करता है वॉइस को. It is called extempo. मतलब मन गया मैंने कर दिया. But grammar says it should go in a fixed line. But in case of re-recording मतलब recording of sound with the visuals, mixing of sound with the visuals. वहां पे कुछ भी फिक्स नहीं है. Nothing is fixed. Suppose a person is moving, एक कोई आदमी एक दौड़ रहा है, तो you have to build up the music. दौड़ रहा है मतलब ऐसा कुछ विजुअल्स दिखा सकता है ना, वो लाल सिंह चड्ढा का जो बिल्डअप किया था, म्यूजिक बिल्डअप, वो तो नहीं है अभी ना, वो तो नहीं है. तो सिंपली दौड़ रहा है एक आदमी, एक सिंपल म्यूजिक उसका साथ भी जा रहा है. सडनली ही रीच सम पॉइंट, जो क्लाइमेक्स पॉइंट ही इज रीचिंग, म्यूजिक शुड आल्सो गो टू दैट क्लाइमेक्स पॉइंट. So in case of cinema is nothing mixed. So final mixing of cinema sound with the visuals is known as re-recording. और अभी मुंबई में जितना भी है, these are all termed as re-recordings. Final mixing engineer बहुत बड़ा आदमी है वो लोग, जैसे अमृत पटम, देवजीत छंगमाई, वो लोग बड़ा आदमी क्यों है? Because somebody else is doing all these things. ये सब कोई दूसरा करता है, फिर ट्रैक उसका पास आता है. फाइनल सेशन, प्रोट्यूल सेशन, नियंडो सेशन, कोई भी सेशन मीन्स all unmixed, the raw files come to them, भाई ये दे दिया. They will do the final mixing by projecting the cinema on the screen. Screen में cinema project होगा and accordingly they will do the mixing. फॉर्मेट क्या होगा? मोनो आजकल है नहीं, स्टीरियो है भी नहीं भी, ठीक है, एटलीस्ट 5.1 फॉर सिनेमा और एटमॉस, डॉल्बी एटमॉस. 5.1 is not the sound with the object. It is not like that. But atmos, if the sound is here, object is here, sound should be here. अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है तो साउंड यहाँ पे होना पड़ेगा. Sound with the object is an atmos. So presently, if somebody is willing to walk in the cinema, presently in present market, now trend is very, in Mumbai they are converting all 5.1 or 7.1 studio into atmos nowadays. Because कुछ साल मतलब 2 साल बाद only the atmos will be there, no 5.1, no 7.1. Why? एक बार अगर मटन का टेस्ट मिल गया ना, तो कहाँ बॉयलर खाएगा? है कि नहीं? That is the thing. Atmos is 3-dimensional. मतलब कहीं से भी साउंड, जहां पे भी, if the flight is moving from the top, we will get sound from the top only. If the birds moving from the top, we will be getting sound from the top only. और 5.1 में क्या होता है? Either you place the sound here, यहाँ पे स्पीकर जो डालेगा ना, अभी यहाँ पे डालो, नहीं तो वहां पे डालो, नहीं तो वो डालो, बस खत्म.
ऊपर में क्या नहीं है. That is why everybody now prefer Dolby Atmos. So Dolby, for Dolby, this is your sound, and you want to have Dolby. Then Dolby, this is two types: encoding, then decoding, then sound. अभी हम लोग आज जो करेगा, दिस इज ये स्टेज में हम लोग साउंड कर लिया और फाइनली हमको साउंड मिला 5.1 मिक्स मिला. इट इज नॉट डॉल्बी. ठीक है, इट इज नॉट डॉल्बी. 5.1 is not Dolby unless and until you will have these two things. Dolby encoding. Encoding मतलब भाई सामान हमको दे दो, आपका पास साउंड ट्रैक है, you give me the soundtrack. This is Dolby encoding. Decoding मतलब अभी हम लोग दे रहा है इस हॉल में, it will be projected. So there is so many others codec also. We will not go depth into it. These are the common process of doing cinema sound. और ये जो म्यूजिक का साउंड है वो तो इजी है. This is completely depends on the mindset of the recordist who is sitting at that particular time in that particular chair. Why मैं बोलता हूँ, suppose you are having acoustic guitar, somebody is playing the acoustic guitar and you are putting the sound in your track, acoustic guitar sound. Now what microphone you will use first and where you will place the microphone. Suppose this is the acoustic guitar. Now where you will place the microphone? Here, here, come. सेंटर Huh? सेंटर वाला Yes. दो दो यूज करने से तो अच्छा है क्योंकि स्ट्रिंग का एक और होल का एक ना. Acoustic guitar produce two different tone in a single instrument. Your placing one microphones will work, but that sound will be turned as mono sound. One is mono, single is one, mono. Mono sound means कहीं पे भी डाल दो, the variation of sound you will not get. Only the single tone कहीं पे भी डाल दो surround में, you can put the single sound in all the speakers, but technically you may be perfect, but aesthetically wrong. So if you are having sufficient microphone with you, then place the microphone in the strings, right, and place in the hole, and make it left and right, at least for stereo recording. That is how we can have the idea. Or unison मालूम है ना, unison music में. Suppose I am having one acoustic guitar and one mandolin. Both are string instrument. ठीक है ना, strings acoustic भी string instrument है, mandolin भी string instrument है, और एक piece ऐसा piece दिया गया है म्यूजिक डायरेक्टर ने, ऐसा कुछ भी, और same piece will be played in the two different instrument. कहाँ पे? Acoustic guitar player भी वो बजाएगा, because everybody will follow the chord chart only. Music is a mathematics. खुद तो बजा नहीं सकेगा ना, so there will be chords. So acoustic guitar वाला भी वो chord बजाएगा और mandolin वाला भी बजाएगा. Same piece, string instrument, different tones. That is called unison music. In that particular case, put the acoustic guitar in the left speaker, half of the acoustic guitar, and put the mandolin in the half of the mandolin in the right speaker, so that you will get the boldness of sound.
or other else you have to put in the center speaker. सब सुनाई देगा, मजा नहीं आएगा. ठीक है? That is how we will have to do. This is the function of मोटा मोटी ना. There are so many other issues also. इंडोर रिकॉर्डिस्ट का बहुत सारा और भी काम है. मैं जो कॉमन है वही बता रहा हूँ. आउटडोर सिनेमा. This is the most toughest one. मतलब tomorrow we will be going out, planning to go to outdoor. I don't know. हो गया स्क्रिप्ट? नहीं हुआ? यो, तू ही बनाना पड़ेगा स्क्रिप्ट. नहीं तो रमाकांत को बोलो. बनाएगा स्क्रिप्ट? अरे कुछ भी सोच सकता है ना, कहीं पे भी नियर बाय. फर्स्ट सिनेमा. सपोज एक डायरेक्टर आ गया, प्रोड्यूसर तुम्हारा पास आ गया, आके बोला मैं पिक्चर बनाएगा तो साउंड का काम करेगा क्या? ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकल में यही होता है. साउंड का काम तुम करेगा क्या? तो तुम्हारा तो पैसा का दरकार है, यू कैन नॉट से नो. तो बोलेगा हाँ करेगा ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? व्हेन यू गोइंग टू बी शूट. आपका शूटिंग कब स्टार्ट हो रहा है? मतलब काल हो रहा है. हाँ हम रेडी हैं. इफ यू आर सेइंग लाइक दैट, tomorrow is shooting, without knowing anything, I am raising my hand that I am ready for shoot or cinema. Then immediately, if he is a very experienced producer or director, immediately he can judge you. इसका तो कुछ मालूम ही नहीं, कल शूटिंग है, आज रेडी है बोल दिया. So you don't have any preparation means. So अगर कोई पूछेगा कि I am going to shoot a film, you are going to my recordist, then you will have to ask first question, when will be shoot? Well, after 1 month. Okay, give me the script first. Script होना पड़ेगा तुम्हारे पास, ठीक है? Give me the script. Without knowing the script, how can we shoot? First questions. Second questions, what will be the formats? So, क्या format? मतलब what format? नहीं, आपका releasing format क्या है? Where you will release your cinema? मतलब PVR. PVR कहाँ पे? गुवाहाटी में, बेंगलोर में, मुंबई में, कहाँ पे? All over India. ठीक है? All over India. Then you will have to ask that in PVR Guwahati you will get only 5.1. In PVR Bangalore, in PVR Mumbai, the 90% of the halls are now at most. So where you will mix? So this is very important. While somebody is asking to do a sound work for a cinema, then first you will have to ask the release thing. कहाँ पे release हो रहा है cinema? Suppose somebody is saying that I don't have sufficient money, so that I should have at least minimum standard of sound, then your sound should be 5.1 at present. हाँ, कल चेंज भी हो सकता है. These are all dynamic. बोला ना, ये कुछ भी फिक्स नहीं होता है कभी भी. तो 5.1 साउंड है, करेगा मतलब शूटिंग होगा, स्क्रिप्ट मिलेगा, 5.1 साउंड प्रोजेक्ट होगा. देन आपको देखना पड़ेगा 5.1 साउंड. कैसे देखेगा? इमेजिन करना पड़ेगा. We'll have to imagine. स्क्रिप्ट पढ़ के, स्क्रिप्ट मिला ना, स्क्रिप्ट जैसे स्क्रिप्ट पढ़ेगा ना, तो आपका बैकअप माइंड में प्रोजेक्शन चलता रहना पड़ेगा. Then and only then you can do a good work. That should be the mindset of a cinema recordist, or try to be a cinema recordist. If you know the cinema, then you will know the music. The cinema is a part of music. Is a part of cinema. You know the sync.
You know the foley, you know the ambient, everything you will know. But if you concentrate only in the indoor music, then cinema तो होगा नहीं. बैकग्राउंड म्यूजिक में खत्म. बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक भी 5.1 में प्ले होगा ना. तो आप सिंगल कीबोर्ड से कैसे करोगे काम? ट्रैक कैसे आप रिकॉर्ड करोगे? Simply recording of track is not work in case of 5.1. ठीक है? So what of the locations for? आ रहा है में. This upload में आ रहा है. So once you have finalized your script and you are very much confident that my cinema will be projecting in 5.1 format. Now, shooting, pre-productions, selection of equipments. Selection of equipments, क्या select करोगे? You are having F6, somebody is having F6, F8. You will carry only F6? No. You should have, theory says, instead of one quadraphonic microphone, you should have rig of microphones. Rig मतलब ऐसा rig बनाओ. Galaxy Studio में देखो, these are all microphones fitted. ऐसा करके पकड़ो. ठीक है? शूटिंग में these are all microphones. एक फ्रेम उसमें है. देखो Galaxy Studio बोल के एक साइट होगा. एक फ्रेम होगा उसमें माइक्रोफोन लगा के they normally shoot the surround sound, quadraphonic sounds. कितना बड़ा? हाँ? कितना बड़ा वाला? It depends. ये सब कुछ भी According to the location. it depends. ये सब कुछ भी नहीं है. Instead of that, now we have bring that things, no? You know, उसका एक माइक्रोफोन को खाली निकाल दो तो SFX1 खाली निकाल के दे दो. Microphones that here 4 microphone in one hardware. You can say that this is 4 microphones. This is not one microphone. 4 microphones in one hardware. So at least you should have 2 to 3 numbers of this type of microphones. These type of microphones you are having at the same time, microphone only convert the signals. It cannot record the signals. You should have recorder. क्या क्या items चाहिए हमको? Sufficient numbers of microphones. Recorder. Recorder भी कौन सा? 192 sampling होना पड़ेगा and accidental eraser वहाँ पे नहीं होना पड़ेगा. So that's when I am recording something in a recorder, there must be another track should be recorded inside the recorder so that if my tracks goes erase, sometimes it happens, then from the recovery track I can recover all my footages, sound footages. समझा कि नहीं? So in normal recorder they cannot do all these things. That is why we prefer what? Sound device. Your recorder is costing around 40,000, 50,000. Sound recorder costing around 4 lakhs. That is their advantages. Bit rate, sample rate, and discrete sound channels. Okay? So that it is very safe. Nothing will be erased from there. So this type of microphone at least you should have. This is one microphone may not be sufficient according to your script. Then you have sufficient microphone so that why this microphone is required. 5.1 matlab 5 plus 1, 6 tracks will be played. 6 track play होगा. इसका मतलब ये नहीं कि 6 track record होगा. You may have 60 numbers of different tracks, and during re-recording,
that 60 track combined together and divide into 6 tracks. It is again depends on the recordist mindset. Recordist का दिमाग में चलना पड़ेगा कैसे करें. Normally voices comes to the center track, but it is grammar कुछ भी नहीं बोलता है कि voice should come to the center track. Voice come from this here also sometimes from the background also. 5.1 there is no surround rear surround speakers, but if it is a 7.1 then LCR left right surround left surround rear left rear right. रिकॉर्ड इसका पीछे भी रहेगा. रिकॉर्ड इसका पीछे मतलब ऑडियंस का भी पीछे रहेगा सिनेमा हॉल में. दैट इज द 7.1 साउंड फॉर्मेट. तो क्या क्या हो गया. माइक्रोफोन हो गया. 2 ये माइक्रोफोन ले लिया मतलब 8 नंबर्स ऑफ आउटपुट यू विल गेट. है कि नहीं. 2 माइक्रोफोन मतलब 8 आउटपुट. So your mixer, your recorder should be how many inputs? At least. So 16 input you should have at least. Your outdoor recorder. Then your lavalier microphones, the RF based radio frequency signals. Wireless lavalier microphones should have, so that you can collect the dialogue. You can place one boom microphone, shotgun. Both the male and female dialogue will be captured. Suppose he is female, he is male. I am placing a shotgun microphone here. Then both the sound will come. I can collect. But female require different treatment. Male requires different treatment. Male voice. So better you should collect individually. So that can be possible with the colored lavalier microphones. Wireless. है ना. यहाँ कहीं पे बोला था है यहाँ पे. कहाँ पे है वो सब निकालना चाहिए था. निकला नहीं ना. आने दो मंगलवार को आने दो सब निकालेंगे. Tonal of male voice is different. Female voice is different. Means you should have shotgun microphones. You should have boom pole. देखा ना boom ऐसे पकड़ता है. That boom pole you record. Sometimes you should have gun mic with the boom pole. Then these ambisonic microphones. Then your lavalier microphones and recorder. All these things you should have. Suppose now microphones. Multi-directional microphone is very important. Means you are capturing a voice like that through boom. Suppose you are operating boom. हवा बहुत तेज चल रहा है शूटिंग में. And your script don't record all this wind sound. Script में wind दिखाया नहीं कहीं पे. Camera is not showing the wind. But उस दिन बहुत तेज हवा हो रहा है. तो क्या करेगा? Either you pack up the locations or you do the sound. Then you should have some cutters. So that microphone यहाँ पे है, so you will have to cut the sound. Cutters you can have. This is customized. You can locally build the cutters. Cutters and filter. Hawa. It is a low frequency sound. So filter you will have to put so that LF sound can be reduced. You cannot cut fully, but it can be reduced. And straight directional microphone like super cut diya, hyper cut diya. So that when I place the microphone here to capture his voice, it should go in a straight line so that this microphone will respond only in the straight line. समझा कि नहीं? Huh? So if I am placing microphone to him, I want to capture, then polar characteristics of the microphone should be hyper cut दिएगा, super cut दिएगा. Then इसका voice नहीं लेगा बहुत कमती आएगा. ठीक है. That is how we will have to
cut down all the noises, and make the shooting perfect. Sync sound, location sync sound. It is a part of outdoor cinema. Location sync sound means, suppose in this location we are doing the sync sound. This is the location. You are capturing my voice, I am capturing your voice, etc. etc. But the AC is not showing but the camera. Camera में AC show नहीं किया है. If the camera is not showing AC, then AC sound should not be there. But if the camera is showing this is a AC room, then it may comes. ठीक है? But suppose script में AC कहीं पे भी नहीं है और camera is not showing the AC, then what will do? First, take the camera shot, take the microphones, and complete the shot with your camera. Camera shoot करेगा, microphone भी shoot करेगा, हो गया. Camera point of view it is okay. Camera वाला बोला कि my shot is okay from my point of view. Sound बोलेगा my shot is not okay because I am getting AC noise. तो क्या है? उसी जगह में, उसी time, at that particular moment, at that particular place, switch off the AC and collect the sound again. Collect the sound means all vocals again. जैसे मैं बोल रहा हूं, हमको फिर से बोलना पड़ेगा script twice by switching on the AC. The camera will not be there, only the sound. For that, what we record the camera footage. Sound recorders should have the camera footage. Means sound recorders should have the visual capture card, so that at the time of recording the sound, he can capture the visuals also. What the camera is capturing means camera output will go to the sound recorder's input. So that I am having the camera footages. Now I will tell artist, भाई यहाँ आ जाओ, आपका footage देखो, यहाँ पे play कर रहे हैं मैं. You give your dialogue accordingly. मैं तुमको अच्छा पाता हूँ, मैं तुमको अच्छा पाता हूँ, फिर से दे दिया. I will record by switch off the AC. In outdoor, what will happen? Sometimes train is moving. Cameraman बोल दिया, my shot is okay. So Amir Khan will not repeat the scene. You cannot say Amir Khan that my this thing, no, my sound footage is not good. I'm getting a train sound, so you'll have to give again your act. No, he will not do. So from directorial point of view, director और cameraman बोलेगा कि मेरा हो गया. I have received very good things. What about sound? No, I am not okay. Do it again. Do it again means no act, nothing, only the dialogue, only the ambient will come. And how he will give the dialogue? By looking through his visuals. ऐसे देता. मैं तुमको कहाँ गया था? फिर बोलो. So you collect. फिर बोलना पड़ेगा. फिर बोलना पड़ेगा. वही लोकेशन में. लिप सिंक कैसे करेंगे? हाँ? लिप सिंक. That is why we have visuals with us. That is why we said, na, we should have the same visuals with us. Huh? Sometimes during shooting, during shot delivery, ऐसे बोल दिया ना, ए कहाँ जा रहा है? बोलिए ऐसा. Script want ऐसा, ए कहाँ जा रहा है? और वो बोल दिया low scale में, ए कहाँ जा रहा है? Continue हो गया. Director बोल दिया everything is okay. Acting is good, camera angle is good, frame is nice. Only the problem, the pitch of the dialogue should be high. तो हम बोलेगा immediately वही location में, hey कहाँ जा रहा है? So fit with the in the lips, because you have the camera footage. That is what the sync sound, location sync sound. You have to do the sound in that particular moment, in that particular place only.
Suppose you had captured the sound in the morning and you are doing the dubbing in the evening. No, it will not work. Because evening ambient is different. Early morning ambient is different. Daytime ambient is different. अगर बोलेगा कि भाई आज पिकअप कर तो कल कर लेगा, कल तो बारिश हो गया. Ambient is different. So you have to do ambient in that particular time, in that particular moment, by making all the zone silence. तुमको बोलना पड़ेगा instructions. So make the zone silence first. So everybody will silence. Now I am taking the shots. Visuals वहाँ पे playback monitor होगा. Visuals चला दिया. आमिर खान को बोला सर you give the dialogues. हाँ, ठीक है. Place the microphone. Same microphone what you are using. Place कर दिया. आमिर खान बोल दिया. Match कर दिया सर fine okay. Come finish उसी में. But still काम फिनिश हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया. एक्सक्यूज मी, वो बड़ा एक्टर लोग स्टूडियो में नहीं साउंड डबिंग नहीं करता है क्या? करता है, वो भी करता है. Suppose your 80% sound in the location is perfect and 20% sound still you are not getting, then they will have to come. That is why I am coming to next point. Everything is perfect, all done very nicely, but still you will have to collect the ambient of that particular scene. Kya ambient? Sound recorders should give the dialogues in their recorders. So Manipur workshop, date 30 of January. Location क्या है मालूम नहीं. Locations, sound ambient for scene number 2, shots 11 or shots 5, जो भी है. That order you have to give. Then you make the room silent, make the ambient silent. मतलब बर्ड्स को तो नहीं बोल सकेगा कि साइलेंट हो जाओ. दो आदमी आया था साइकिल का ये बेल बजा के, स्कूटर लेके. उसको बोलो make the zone silence, then take the ambient. The longest the duration, the better always. At least 30 seconds. Take the ambient. तो क्यों? Why the command is important? Day 30, location ये, the ambient of scene number इतना, shot इतना, because you are doing the post production work after 6 months. तब तक तो भूल जाएगा ना कौन सा कहाँ पे था. डॉट सिनेमा तो बीच में कर लिया, गर्लफ्रेंड भाग गया दूसरा का साथ, वो सब तो टेंशन है, तो सब कुछ भूलेगा ना. Then you will have to find out. हाँ, ये सीन था, सीन नंबर 24, शॉट नंबर 11 मेरा. I will find out the ambient क्या था. That ambient you will have to collect, and suppose वो आर्टिस्ट फिर भी खराब हुआ था और बाद में माइंड भी चेंज होता है डायरेक्टर का. अरे ये डायलॉग को थोड़ा ऊपर का पिच में बोलता है. द पिच वाज वेरी लो. मैं तुमको अच्छा पाता हूँ, मतलब ये पेस नहीं मिल रहा है, पिक्चर का स्पीड नहीं मिल रहा है. मैं तुमको अच्छा पाता हूँ, स्पीड मिल गया. तो डायरेक्टर बोला द पेस ऑफ द सिनेमा इज वेरी लो, नाउ वी वांट टू पिच अप द डायलॉग्स. लेकिन एट द टाइम ऑफ शूटिंग तो वही परफेक्ट था. बाद में उसको ऐसा कुछ फील हुआ कि नहीं, उसको ऐसा करना है. डायलॉग विल बी सेम, स्केल विल बी डिफरेंट. In that particular case, you will have to put that ambient in the background in the studio. Dubbing कर दो और ambient background में वो जो लिया हुआ था ना उसको लगाओ. Then it will feel like natural. ठीक है? Do we need to set an EQ for different actors? It depends. You cannot do. You are not allowed to do EQ for Amitabh Bachchan. What about limiters? Oh, sorry. I will bring. See, EQ is the ornaments.
कल भी बोला था, you are having 3 different jeans pen, but you cannot put all together. जो चाहिए, रात को जींस पहन के सोएगा क्या? नहीं सोएगा. हो हे बोल के सोएगा क्या? नहीं. So EQ is ornaments. Unless and until you are not getting your voice, your sound, then only you can go for the EQ. Compressor is different. So EQ, suppose Amitabh Bachchan voice अगर कहीं पे हो रहा है, बज रहा है, if somebody is playing Amitabh Bachchan voice, तो हम जाके देखना नहीं पड़ेगा कि अमिताभ बच्चन है क्या, वो तो देखना नहीं पड़ेगा. So by listening their voice only, we can identify them. है कि नहीं? लेकिन अगर तुम्हारा वॉइस है तो असम में कौन जानता है तुमको? हमको कौन जानता है यहाँ पे? Nobody is known. I am not known for my voice. You are not known for your voice. In that particular case, कुछ भी करो, बनाओ अच्छा करके, खराब करो, अगर कुछ भी करो, you can do EQ. But in case of the celebrity है, we know their voice quality. In that particular case, you don't have any right to do the equalizations because they are known for their voice only. ठीक है? But suppose somebody is playing tabla, you are not getting the perfect tone. Then you can do the equalizations because you know the tone of tabla, how it should be. You know the tone of mandolin. You know the tone of lead guitar का tone तो कोई नहीं बोल सकेगा कि I know the tone. It completely extempo है. But tabla, dholok, these are very known tone. You can do the equalization to make it correct. Suppose that is only do the post. Don't do anything at the time of recording. Suppose you are a married man and today you have recording from 11 a.m. morning और 10 बजे तुमको बीवी ने राइट लेफ्ट गाली दिया है, ठीक है? 10 बजे तुमको घर में बहुत गाली दिया है, खाना भी नहीं दिया है, तो तुम्हारा दिमाग में तो अलग चल रहा है. तुम आके रिकॉर्डिंग करेगा तो तुम्हारा खराब होगा उस दिन. Maybe there is chance of spoiling the recording because you are not mentally fit. इसीलिए you do the flat recording only. You capture the sound flat. Don't do EQ at the time of recording. Giving EQ at the time of recording मतलब तुम ऑलरेडी मीट मसाला चिकन में ऐड कर दिया, अभी बाद में सोचेगा कि मसाला ज्यादा हो गया, हाउ वी विल एक्सट्रैक्ट द मसाला फ्रॉम द चिकन? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ऐड ही मत करो, जितना सही है बाद में तो. So I just want to know, in 1990 films like Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, their voices are very small, but nowadays their vocal is very deep. No, and it's nice to listen नहीं, also. What is the वो difference? वॉइस खराब नहीं था, कम भी नहीं था, Oh, in स्पीकर 1990. नहीं था उस टाइम में. Oh. एक स्पीकर था खाली मोनो. अभी तो पूरा स्पीकर है ना, ऊपर में है, नीचे में है, हर जगह स्पीकर है, तो उसका उसी हिसाब से आता है. उस टाइम में ओनली एक स्पीकर रहता था ऐसा स्क्रीन का पीछे में. उससे हम लोग मोबाइल में देखने के टाइम में ना, वो सेम मिक्सिंग उसी हिसाब से हुआ ना. मोबाइल में जब देखा तो मिक्स करने का बाद ही देखा ना, तो मिक्सिंग उसी हिसाब से हुआ ना. ऐसा नहीं था कि उसका वॉइस अलग था. हाँ, अलग होता है, एस जैसे बढ़ेगा वॉइस का टोनल भी चेंज होगा, वो होता है, वो वॉइस चेंज होगा. मेरा वॉइस आज जो है कल वो नहीं रहेगा. इसलिए हम लोग भी डबिंग सॉन्ग का डबिंग करता है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डब द सॉन्ग. आज एक आर्टिस्ट ने गाना गा दिया, 2 दिन बाद आके बोला मेरा ये लाइन करेक्ट करना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैच द टोन. तो तुमको बार बार उसको टेप रिटर्न करके थोड़ा EQ भी करना पड़ेगा, सो दैट इट मैच विद द अर्लियर वॉइस. नहीं तो जार्क पड़ेगा, टोनल जार्क, वो सब दिखा सकता है हम लोग, लेकिन इट विल टेक वेरी मच टाइम. हाउ इट शुड बी. So you are asking about the compressor. Theory says your
ꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯣ ꯈꯨꯠꯅ ꯇꯧ ꯂꯩ सी ये ग्राफ हमेशा याद रखना दिस इज द ग्राफ इसका ग्राफ हमेशा दो चीज का बीच में होता है व्हाट इज दिस ग्राफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस डीबी ठीक है एंड दिस इज व्हाट से 0 dB and this is all +2 +4 etc it is -2 -4 etc theory says your level should be 0 dB in all the frequency क्या है 20 हर्ट्ज है ये 50 हर्ट्ज है ये 100 हर्ट्ज है ये 2 किलो हर्ट्ज है ये 5 किलो हर्ट्ज है ये 18 किलो हर्ट्ज है ये 20 किलो हर्ट्ज theory says your graph remains same plus minus 5% theory says ये theory says your graph ऐसा होना पड़ेगा हेलो ये होता नहीं मैं गाना भी गाएगा तो क्या गाएगा वॉल्यूम कंट्रोल तो मेरा यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल लगा दिया अभी गाना गाओ एक ही दारा दी ऐसा होता है ना दिस इज द ब्यूटी ऑफ सॉन्ग sometimes it comes down sometimes it goes away so the graph should be like that for all the frequency it should 0 dB but sometimes what happened suddenly ऐसा ऐसा चल रहा था it goes like that ऐसा करके चला गया बहुत ऊपर इमीडिएटली क्या हुआ डिस्टॉर्शन आ गया सो तुम तो फेडर पकड़ रहा था आर्टिस्ट तो तुमको इंडिकेशन नहीं दे रहा था ना मैं आ रहा हूं ऊपर जाने के लिए तुम फेदर को दिस नॉट पॉसिबल सो सडनली इट गोज वेरी हाई मींस बियॉन्ड योर कंट्रोल इन दैट पर्टिकुलर केस हाउ मेनी इट गोज हाई सपोज ये कितना गया +6 dB चला गया ज्यादा then you have to compress the thing then you have to put the compressor को फिर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि when it will compress when the voice reaches to 6 dB then only you compress then when the sound goes +6 if it goes beyond that then it will distortion and awkward ये point में the compressor will make the sound down it will compress that is the work of compressor if the sound goes beyond very large like somebody is playing nagara higher compression ratio is the limiter बहुत ज्यादा हो गया sound then instead of compressor you have to place limiter compression ratio कैसा होता है 4:1 6:1 8:1 4 dB change in output will change only 1 dB ऐसा compression ratio but unless and until you feel that it is going above the distorted level then only we are trying to put the compressions ठीक है सर जी एटेक और रिवर्स के बारे में भी थोड़ा बता रहा बहुत सफिशिएंट नहीं है ना ngang này hồn attack release sustained decay क्या है like foot drum kick drum देख 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 ऐसा नहीं है ना देख देख ऐसा नहीं होता देख means it goes suddenly high attack this is called attack this part is called attack देख then release हो गया this part is called release and रहेगा थोड़ा टाइम this part is called sustain and उसको तो मरना पड़ेगा ना साउंड को
नहीं तो बसता ही रहेगा 2 महीना तक. दिस इज कॉल्ड डीके. डीके मतलब डाइंग अवे ऑफ साउंड. साउंड मरेगा. नहीं तो हम अभी इसमें बोल के जाएगा कुछ, सारा दिन घूम के आएगा, वही बसता रहेगा यहाँ पे. If there is no decaying of sound. So this is what attack. Attack. The sound you have to identify the where is the attack. Like kick down has got the attack. But बांसुरी उसमें अटैक नहीं है. सडनली वॉइस जहां पे चला जाता है, दिस इज अटैक. सडनली साउंड जहां पे पिक. व्हाट इज पिक? दिस इज अ वेवफॉर्म. दिस इज कॉल्ड पिक. Peak. This is called peak amplitude. Sound means साउंड बोल के दिमाग में आने से हमेशा ये आना पड़ेगा, वेवफॉर्म. कुकीज बिस्किट. और कोई भी इंस्ट्रूमेंट का ये फिगर होता है, इसको बोलते हैं एनवेलप. अटैक, रिलीज, सस्टेन, डिके. एनवेलप. सब चीज में एनवेलप होता है साउंड में. ठीक है. और एक बात मैं बता रहा था कि ये इक्वलाइजेशन में we don't have any liberty to do the equalization for a very known celebrity. अगर कोई बिल्ली चिल्ला रहा है बाहर में, बिल्ली को तो देखा नहीं ना, उनका बाहर ही चिल्ला रहा है रात को, तो तुम बोलेगा क्या? माँ कुत्ता को भगाओ. बोलता है. अगर कुत्ता चिल्ला रहा है तो बोलेगा क्या ये बिल्ली इतना क्यों चिल्ला रहा है? आइडेंटिफाई द साउंड विद देयर टोन्स. क्या बोलता है ये? आइडेंटिफाई द साउंड with the tones is termed as timbra. T-I-M-B-R-A. So where the timbra is prominent, without seeing the object, we can identify the sound. When the timbra is prominent, matlab you don't have any right to do the equalizations. लेकिन मेरा साउंड कौन मालूम है? करो कुछ भी करो.